Assalamu alaikum, guys. This is Shanawaz Sumroa and welcome you to Nursing Academy. Today, specifically, we will be just focusing on research process, and to understand with the research process, I must, touch few concepts before, and I hope that with the series of research, I'm making you understand to know the research from a different lens. So, first of all, let's discuss National Institute of Nursing Research's strategic plan for 2022 to 2026. Actually, there is one organization or institute which is National Institute of Nursing Research. I will be, adding this document in the description. So please go through this to understand it more. Superficially, we should know what is their plan or mission and what are the current research topics or trends. ताकि हम जो जब when we are planning to conduct the research for our thesis or for our projects, or is there any academic task? Yeah, if we are interested for the research. So under the umbrella of National Institute of Nursing Research जो mission है उस umbrella के अंडर में करें ताकि we would help to success the strategic plan for 2026. So what is their mission? Their mission is to solve, actually they want to solve the pressing health challenges by the leadership of nursing sciences. Yani NINR mission wants to lead the nursing sciences to solve the pressing health challenges by the nursing sciences and to inform the practice and policy maker. Okay, we can solve the health challenges what we are facing, or to tell them not only to solve, but we can solve it with strong leadership skills and to optimize health. And this is how we can optimize health and advance health equity in the future. So that's the mission of NINR, and under this plan, they have given us some guiding principles you can go through and some research lenses. So this is most important, the content which I found, and I must share with you that see, the research lenses say we can take, the topics under the umbrella of these five, the titles or these five lenses. So whatever you are conducting research, or if you are confused to choose the topic for your research, so you should, choose the topic under the umbrella of these five research lenses. Yani through these lenses we can examine the health challenges and to fulfill the mission of NINR. So why I'm telling you, because under these lenses we have complete guidelines, we have complete principles. NINR will help us. They can give us fundings, and we can do a lot. Under these the lenses. So health equity is one of them. Yani again, it's a broader lens, but you can see through this or via this. Yani you can do research, you can conduct research on gender equalities and what are biases in the healthcare, what type of challenges the different genders in our healthcare settings are facing. So we can do research on this. Similarly, people are conducting research on social determinants of health, because NR और दुनिया अब इस चीज़ को समझती है कि सोशल डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा और बड़ा फैक्टर है किसी की हेल्थ में, हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए। पॉपुलेशन और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ को रिलेटेड और उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस होती हैं. यू कैन ऑल्सो कंडक्ट अंडर दिस अम्ब्रेला. We have prevention and health promotion, and the system models of care. So these are the five lenses we can read here in a detail. So you can go through it with the description.
So another point I want to share you first before the research process, which is the research problem. यानी एक चीज़ बहुत ही अ, हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, चाहे हम नर्सिंग स्टूडेंट हैं या हम मास्टर्स कर रहे हैं या हम प्रैक्टिस में हैं। रिसर्च, प्रैक्टिस और थ्योरी ये तीनों ओवरलैपिंग है, यानी इन तीनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। बेसिकली रिसर्च कम्स जब आप अपने प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम देखते हो और वो प्रॉब्लम ज़्यादा स्ट्रेंथन हम कर सकते हैं विद ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। जो कुछ हम थ्योरी में पढ़ते हैं, यानी जो नर्सिंग थ्योरिस्ट जो जो भी थ्योरीज देकर गए हैं, वो तमाम की तमाम थ्योरीज ऐसे नहीं हुई। वो तमाम प्रोलॉन्ग्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसर्चेस के बाद किसी ने जाके थ्योरी दी। यानी नर्सिंग थ्योरीज जो बहुत दिखने में बोरिंग और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी लगती हैं, वो नर्सिंग थ्योरीज भी बहुत अरसे तक रिसर्चेस और एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद हुई है। और वो तमाम की तमाम रिसर्चेस हुई क्यों? बिकॉज दे फेल्ड अ प्रॉब्लम इन द प्रैक्टिस। So students should know that the overlapping purpose of nursing research, nursing practice, and nursing theories. So when you are good in the theories, you can go back, you just see them ke how they have given the theories. You will come to the conclusion ke actually they found problem in the practice and they put that problem on the basis of evidences, and after a lot of research they have given the theory. So रिसर्च प्रोसेस के लिए रिसर्च के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च प्रॉब्लम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तब प्रॉब्लमेटिक लगता है व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग प्रैक्टिस। यानी आप अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं, यू गो टू द वार्ड फॉर द क्लिनिकल्स एंड यू सी दैट वहाँ पर आईपीसी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही, यानी वहाँ पे शॉप्स की हैंडलिंग फॉर एग्जांपल सही नहीं है। यू जस्ट ऑब्जर्व वन प्रॉब्लम देयर, यू कम बैक रिफ्लेक्टिव लॉग हम लिखते हैं। आपने लिखा कि भाई हमने तो आईपीसी और प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़ी कि जी शॉप्स को डेंजर बॉक्स में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, रिकेप नहीं करना चाहिए, या उसको हम 1/3 तक फिल करते हैं, लेकिन हमारे वार्ड में तो ऐसा नहीं था। तो you actually found a problem in the practice. Ab now, if you wanna resolve that problem and you are a student and you are interested in research as well, then what you will do? You will do first to collect the evidences. यानी आप evidences collect करना शुरू करेंगे, और to conduct the evidences we make that problem as a research problem. Yani any problem in the practice on which we can do a research to resolve that problem, we call it a research problem. So your research problem first, on the very first basis, your research problem should be uh, decided. And how we decide research problem, we need to understand. There is one mnemonic, it's called finite. So research problem should be feasible, should be interesting, should be novel, ethical and relevant. मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी योर प्रॉब्लम। तो योर रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी फिजिबल, इससे मुराद के विद इन योर रीच होना चाहिए। यानी प्रॉब्लम, जिस तरह आई सेड कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम योर शुड बी योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए व्हेन यू आर एक्चुअली कंडक्टिंग द यू आर एक्चुअली डूइंग प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में जो आइडेंटिफाई करते हैं तो इट्स डेफिनेटली अ फीजिबल। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू टू द सेम वार्ड और आप देखते हैं कि वहाँ पर किसी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, अब बीइंग ए स्टूडेंट वी कैन नॉट take that problem as a problem. So smartly we will skip that. Why? Because it's not feasible. Similarly, few things are not within our reach. Few things are not, we cannot afford.
few, the research problems are very, close to your heart, but it's out of your reach. You cannot support technically, you cannot support financially, you actually do not afford time or money to manage that problem, so we will skip that. So whatever your problem is, it should be feasible to you, yani within your reach, within the reach, with respect of time, with respect of money, with respect of your expertise, with respect of your environment. Your research problem should be इंटरेस्टिंग, यानी आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हमने इसको छेड़े तक लेकर जाना है, कंक्लूड तक करना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी शुड बी वेरी इंटरेस्टेड in a problem. Your research problem should be novel. So, under the umbrella, what we have discussed in the NINR's mission, your problem should be novel. Yani, you should focus that your problem should be different from whatever the research it has been conducted yet. Ethical considerations बहुत ही important है. What's going on and what had passed, you see that if there is ethical issue or the negligency not to consider ethics is failed research. So ethics is very much important the component of your research problem. You should consider the ethics at the top, I think. So for example, what had you just go to the different the research, you then see that research is from the ethical angle. You get to know, okay, a lot of problems are there, yani we should respect the participants and all. Just take example dunga. If you are a for example, if you are a nursing student or final year student, or you are a nurse intern and you manage the ward, or maybe you are a head nurse and you are managing the ward and you want to conduct the research now. So what do you think? Being a nurse, whatever your research would be, your research problem is, मुझे ऐसे बहुत यानी you can just see if I'm getting it properly कि अगर आप पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, you're a head nurse. So what do you think कि जो भी आपके क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपकी ये क्वेश्चन है कि हाउ मच योर पेशेंट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर सर्विसेज, तो आपको क्या लगता है व्हेन यू गो टू द पेशेंट एंड यू आस्क कि आपको हमारी नर्सिंग सर्विसेज कैसी लगती हैं, तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स वुड बी लाइक यस और नो. हेड नर्स को देख के क्या पेशेंट्स सारे ही सच बोलेंगे? डोंट यू थिंक कि उसको देखकर बहुत सारे आंसर्स छुपा देंगे इस डर से कि भाई अगर हम इसको बताएं कि आपकी सर्विसेज सही नहीं है, तो हो सकता है और भी सर्विसेज में कमी आ जाए या और भी नर्सिंग केयर में प्रॉब्लम आ जाए. पीपल थिंक लाइक दैट. So ethically, don't you think that patients are actually vulnerable populations? Concern and all, the things, ethical things should be clearly, conveyed to that person or patient first. कि ठीक है मैं एड नर्स हूँ, लेकिन इस पे कोई भी आपके नर्सिंग केयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप जो भी बताएं सच बताएं कि क्या क्या मसले हैं, मसाइल हैं. तो इट विल चेंज द रिजल्ट्स. सो एथिक्स बहुत ही छोटा कंपोनेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. और रेलेवेंसी to your scientific knowledge, clinical and health policy, and to your future research is very much important here. So I hope that now you are able to understand the research problem, how to select the research problem, which is very first is say state to conduct or plan the research, and how can we relate the research problem with the current trends. You should know, or you should visit to understand or to review the strategic plan by National Institute of Nursing Research. Thank you so much. Stay connected for more, the content on research. Thank you so much for your support and whatever you are doing for me. Like I'm looking at a lot of people are appreciating, and thank you so much. It actually motivates me to work more. Thank you.